हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साधन, जहां पे हम करते हैं स्टॉक्स को सिंप्लीफाई। और आपके कमेंट्स हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए प्लीज डू कमेंट, बिकॉज आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके ही एक कमेंट से मैंने पिकअप किया है। somebody has commented that analyze Ganesha Ecosphere। आपके रिक्वेस्ट को ऑनर करते हुए ये वीडियो बना रहा हूं। और मुझे भी ये थीम काफी पसंद है, क्योंकि ये रिसाइकलिंग का जो थीम है वो एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म थीम है कि दिस इज गोइंग टू remain as a theme for quite 3-4 year at least। गणेशा इकोस्फेयर का बिजनेस मॉडल क्या है, गणेशा इकोस्फेयर की जो प्रोडक्ट लाइंस एंड वो पैसे कैसे बनाती है, उनके डिटेल में फाइनेंशियल एनालिसिस पे मैं जाऊंगा। और साथ ही साथ साधन का फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के बेसिस पे गणेशा कैसा परफॉर्म कर रही है, सो दैट वी कैन बी श्योर वेदर दिस कंपनी इज गुड और बैड। So those things would be analyzed in next 15-20 minutes. So stay tuned till the end of the video. When you close this video, you will be knowing about a new sector, about a new stock, and a different way of looking at investing. Typically recycle होते हैं, उसमें से अवेंडस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिसर्च किया एंड दे फाउंड दैट प्लास्टिक वेस्ट जो है उसमें स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन कलेक्शन रेट इज़ वेरी हाई, पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट इन रिसाइकलिंग रेट इज़ मीडियम, and most importantly the emergence of new technology disruption is green means medium, so the technology obsolescence risk is low. वहीं emergence of new company is also green, which is moderate. So जहाँ पे emergence of new company थोड़ी सी कम होने वाली है, जहाँ पे technology disruption कम होने वाला है, वैसा segment is supposedly is a better segment than a sector like battery waste, जहाँ पे कि technology disruption risk are very high. It is shown as red and emergence of new company is very high. So technology को master करना सबके बस की बात नहीं है, and that's why I really feel that rather than choosing a battery waste recycler, we should focus on plastic waste recycling. So this is a framework which I use, जहाँ पे competitive intensity is low and technology risk are low. That's the place I want to be. इस गणेशा इकोस्फेयर की सबसे main product जो है वो है rpet fiber. It is basically a fabric made from recycled polyethylene terephthalate, जिसे PET कहते हैं. This is polyethylene terephthalate, which is a type of plastic. So उसमें क्या करते हैं कि वो used PET bottles को flake बना देते हैं and flake से recycled PET chip बनता है and उसी से recycled PET yarn बन जाता है. So this is the process of making of rpet fiber. Product portfolio of this company includes yarns, which is basically can be categorized under rpet fiber are yarns, spinning yarns, non-woven fabric which are going into carpets, and non-woven carpets. And so basically 2-3 categories broadly are woven and non-woven fabrics and carpets, and yarn spinning is a category where their rpet fiber is consumed. Yarn जो होता है, जो फाइबर होता है, उसको एक जगह कंसोलिडेट कर देते हैं, that is called yarn. Non-woven carpet, so basically this is a collection of fabrics which is not woven into carpets. Then there are non-woven carpets which look like small carpets which can be traded. And there are fiber fillings which gets consumed into pillows and all. The product category is rpet spun yarn. उसमें यूज पेट बॉटल्स लेते हैं, उसको फ्लेक्स बनाते हैं और उससे रिसाइकल्ड पेट चिप बनाते हैं एंड उससे फिर रिसाइकल्ड पेट यार्न बनता है, बट उसमें एक मिक्सिंग की जाती है. बेसिकली दैट मिक्सिंग इज आइदर कॉटन, जिसे टेरी कॉटन कहते हैं, या फिर रेयॉन होता है. सो बेसिकली दिस इज अ रिसाइकल्ड पॉलिस्टर प्लस कॉटन और प्लस रेयॉन. सो दिस इज rpet spun yarn. Spun yarn products में दो प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं. वन इज सॉलिड डोप डाइड and the other one is melange. There is a third category called rpet spun yarn, which is filament yarn products. उसमें भी 3-4 use cases होते हैं. One is texturized yarn, other category is twisted and doubled, and there is a third category of injection, and fourth is fancy yarn. गणेशा के प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस बहुत ही वैरिड है. बॉडी वार्मर्स it is used in as a dressing materials. It is used in the process of shirting, suiting, and trousers and products get used. So एक extensive use है. All the branded companies like Zara and H&M. Also, as I said about home textile companies like Indocount and Welspun are their clients because they supplied these yarn to them. Production capacity breakdown कुछ ऐसा है कि FY23 में ये लोग largely textile focus थे. Around 1 lakh ton per annum was their textile, which is more than
80% of their overall capacity, and non-textile which is basically the rpet chips जो कि पैकेजिंग में यूज होता है. सो पैकेजिंग वाला पोर्शन इज हार्डली situated at Warangal, and that is 14,000 ton per annum. But FY25 में companies is making efforts to shift from textile, largely a textile player, to at least 40% towards 30% towards non-textile, which is packaging side, which is the Coca-Cola and the Pepsi side, or any PNG HUL kind of FMCG client they can expect there. So उनके textile की वाली जो capacity है, that is going to remain same. They are going to expand on their Warangal plant by 3x. So अभी जो 14,000 टन पर एनम की capacity है, that is going to become 28,000 by the end of this June, and by the end of this year they will have 42,000 ton per annum capacity. So FY25 is going to be interesting year when the business model is going to be shifted towards non-textile, which is the way to grow. प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी काफ़ी ग्रोथ हुआ है. दिस कंपनी हैज़ डन गुड कैपेक्स. FY18 में रफली 97,000 MTPA का इनकी कैपेसिटी थी ओवरऑल. नाउ इट इज़ 1,15,000. So roughly 18% growth is there across 5 years, and they are still growing at a rapid pace that is into value added category. Currently they are mostly based out of Bilaspur and Temra, which is MP, अराउंड 49,000 टन पर एनम. उसमें से आप देखेंगे कि ज़्यादातर कैपेसिटी जो है कानपुर, रुद्रपुर और बिलासपुर की है, वो आरपेट फाइबर में है. आरपेट फाइबर इज सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दैट. एंड दैट यार्न वाला जो पोर्शन है, जो कि करंटली उसमें भी मार्जिन अभी ज़्यादा नहीं है, बट स्लाइटली वैल्यू एड है, बट स्टिल इट इज़ नॉट वेरी रिन्यूमरेटिव. वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी है. बट वारंगल मिक्स इज इंटरेस्टिंग. अराउंड 50,000 टन पर एनम में आरपेट ग्रैनुअल्स, which are basically the chips which are going to the bottlers, this is going to be 14,000 ton per annum. So that's the interesting part. And RPSF and PPSF, which is the textile part, is also there, 12,000 and 10,000 ton per annum. And they also have a presence in Nepal, where they have 12,000 ton per annum ki washed flex capacity. This company is among the leading manufacturer of rPET fiber in India. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अगर नज़र डालते हैं तो विल सी दैट दिस कंपनी हैज़ डन ओके इन last couple of years. FY20 to FY23 the top line has grown from 888 crores to 1132 crores. वहीं पे प्रॉफिट जो है वो 64 करोड़ से बढ़ करके 73 करोड़ है. प्रॉफिट में जो है वो नंबर्स नहीं आ रहे हैं बिकॉज recent years में you know that the textile companies are not doing great. The cotton prices are low and demand are low, so that's why उनकी जो pricing है, even though it is recycled textile, but the pricing is pegged to the virgin textile. So and virgin textile is either polyester or cotton. So cotton prices are low, so वहाँ पे prices कम है. And even crude is not very high. So crude से derived जो भी polyester हैं या विस्कोस हैं जो अलग कैटेगरी है, उनकी भी प्राइसेस आर नॉट दैट हाई. दैट्स व्हाई द प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट देयर. रियलाइजेशन इज लो. EBITDA has grown from 100 odd crores to 130 crores, which is a okay jump, but given the capacity they have underwritten, the jump is not significant. But I think this is the place where they will jump in FY25, because that's the place, that's the time when their deals with brands will accumulate, like Coca-Cola and HUL and all those. They have spoken to around 40 brands and 15 ब्रांड के साथ इनकी डील एग्रीमेंट हो गई है. सो वारंगल में एज एन व्हेन दे आर रैम्पिंग अप द कैपेसिटी, their top line would grow and profitability will also be significant, because the profit margin they are targeting is 18 to 20%. So if you look at the quarterly performance of this company, then revenue in Q4 was 300 crores. अभी घट गई है एक्चुअली, क्योंकि realization is linked to the cotton prices and textile prices. पैट भी अकॉर्डिंगली 15 करोड़ से घट करके 13 करोड़ है. तो ये रियलाइजेशन में जो हिट है बाय वर्च्यू ऑफ रिडक्शन इन टेक्सटाइल प्राइसेस है. बट श्योरली दिस विल मूव टू नॉन टेक्सटाइल पार्ट, विच वुड बी रफली 40%. तो वहाँ से मार्जिन्स वुड गो अप. Ganesha Ecosphere is a circular economy stock because it processes 16% of the PET bottles currently being recycled in India. So being one of the leader in waste recycling of
पेट बॉटल्स, इट हैज बीन अ बेसिकली अ टेक्सटाइल कंपनी. सो इस वेस्ट को आप या तो आप यार्न बना सकते हो, दैट इज ईयर थिंग which many companies including Ganesha was doing. The other option is bottle to bottle, यानी कि बॉटल से आपने पेट बनाया और फिर पेट से फिर वापस बॉटल बनाओगे. तो ये कंप्लीट सर्कुलैरिटी की मैं बात कर रहा हूँ. सो दिस कंपनी इज मूविंग फ्रॉम पैराडाइम ऑफ बॉटल टू चिप, बॉटल टू yarn, बॉटल टू टेक्सटाइल टू बॉटल. So इस supply chain में they are becoming more and more relevant when they are moving from textile supply chain to packaging supply chain, because bottle to bottle means packaging, and packaging supply chain is slightly more benign than the textile value chain. People who have watched our videos on Sadhan, for example IndoCount पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया था 1-1.5 साल पहले, और वो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि दैट टेक्सटाइल वैल्यू चेन इज स्लाइटली टफ, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडीज बिकॉज मार्जिन्स हैज ऑलवेज बीन कंप्रेस्ड, एंड दिस कंपनी Ganesha Ecosphere has always been fighting for margins. And basic reason why the textile industry is struggling with margin is because there are concentrated power in certain hands. For example, Walmart is the biggest player of textile, or H&M or Zara, whoever is controlling the brand is the most powerful. And on the other hand, these companies, for example even IndoCount और Ganesha Ecosphere जो yarn बना रहे हैं, इनके पास उतनी bargaining power नहीं होती है, and that's why the margins are compressed. But the new paradigm where Ganesha Ecosphere has, for example, signed a contract with Coca-Cola that they will be supplying their bottles to them, which they will use and rebrand them as a recycled rPET bottle, and that's why they will be paying better premium than the textile guys. First, because textile में there's a margin is very tough to obtain, but in FMCG part, food में आपको पता है कि margin हमेशा ज़्यादा होता है. So Coca-Cola and Pepsi enjoys huge margin. So वहाँ पे कुछ chances बेहतर होते हैं for any supplier to obtain from them. So value shifting हो रही है from textile to packaging, and that's the summum bonum, that's the summary of this video discussion. So we will be talking more in details about how this company is transforming itself and how this industry is evolving. So talking first about the industry evolution. So मैंने बात की थी कि EPR is becoming a very important thing. So talking facts now, this has now become a law that by 2025 all the brands, all the producers have to commit to certain responsibilities. Friends, we are moving from traditional linear model of economy to a circular economy model. Linear traditional model ये था कि एक प्रोड्यूसर होता है और एक कंजम्पशन करता है और उसके बाद एक वेस्ट होता है. ये तीन लोग होते हैं और इसमें तीनों में कोई कनेक्शन नहीं होता है. बट सर्कुलर इकोनॉमी सेज दैट देयर हैज टू बी अ वेस्ट प्रोसेसर जो कि उस वेस्ट को प्रोसेस करके फिर उसको वापस रॉ मटेरियल के फॉर्म में, यूजेबल रॉ मटेरियल के फॉर्म में प्रोड्यूसर को पहुंचा देता हो. सो ये इकोनॉमी एक सर्कल के रूप में मूव करती है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सर्कुलर इकोनॉमी. सो आज मैं सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा जिसका इंपॉर्टेंस डे बाय डे इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज we are living on earth and human intervention into natural things have become so rampant that there is a dire need to actually implement a certain responsibility on producers. And with this thought process, Government of India has suggested that there should be extended producer responsibility. So what responsibility a producer should have? आप एक प्लास्टिक का सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर बाइंग अ कोक बॉटल, जो कोका कोला है उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस भी include की गई हैं in this extended producers responsibilities. So these are called EPR rules which are going to be implemented soon. This has now become a law that by 2025 all the brands, all the producers have to commit to certain responsibility. Recycling का जो थीम है वो एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म थीम है. करंट मार्केट में बैकड्रॉप में इंटरनेशनली एंड नेशनली ऑल्सो जो मूवमेंट हो रही है उसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि दिस इज गोइंग टू remain as a theme for quite 3-4 year at least. तो इस सेक्टर में क्या हो रहा है ये भी कवर करेंगे. टॉप डाउन अप्रोच रहेगा हमारा. सबसे पहले सेक्टर में क्या करंट ट्रेंड्स हैं वो कवर करेंगे. रिसाइकलिंग होती क्या है, किसी भी रेशियो के बेसिस पे आप जो कोई शॉर्टकट्स यूज करके स्टॉक पिकिंग इज नॉट अ राइट एंड सेफ वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन करंट मार्केट. That's why we have developed our tools of looking at stock market, and that's why we are teaching these things in साधन मेंटरशिप प्रोग्राम. और ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है अप्रैल 1st वीक से.
which is definitely going to help a new or a intermediate level investor to become an advanced level investor, because we are not giving you fish there, we are teaching you how to catch fish. Investing is a life skill, and if you really value investing and if you have benefited from stock market by investing into good stocks which have compounded. If you ask me, I have personally benefited with more than 45 stocks, at least doubled post my investment. So कहीं ना कहीं हम लोग एक तरीके से, एक नए तरीके से स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं. If you want to be part of that movement, then join Sadhan community under Sadhan Mentorship Program. So do check out our link. It's learn.amitabhvatsya.com, and you can look out for other courses like Sadhan membership as well. So see you guys there. So EPR को डिफाइन करने में एक टर्म है, this is called PIBO. PIBO, P stands for producer, I stands for importer, BO stands for brand owners. So these three category of people, they have certain compliances to do, and this will be monitored by Pollution Control Board. State subject है, so state की एक Pollution Control Board होती है, एक center की होती है, so उन दोनों से इनको comply कराना होगा. And उसमें दो चीजें हैं. एक, before we understand this framework, first thing is that कोई आप एक waste produce कर रहे हैं, for example plastic is a redundant waste, so plastic आप use करते हैं तो उसकी recycling is your responsibility. So that is responsibility number one. Other responsibility is slightly moral, and it is also very important, which is following the responsibility number one in terms of timeline. That responsibility is talks about that once this waste plastic gets processed, then आप उसका जो प्रोसेस होने के बाद अगर वो प्लास्टिक में वापस आ जा रहा है तो उसको रीयूज करें. सो रीयूज इज द पैराडाइम, न्यू पैराडाइम. सो रीयूज ऑफ रिसाइकल्ड थिंग, सो रिसाइकलिंग एंड देन रीयूजिंग. सो दीज आर टू ऑब्लिगेशन. सो रिसाइकलिंग ऑब्लिगेशन की स्ट्रिक्टली बात करें तो दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2025, एंड ऑल दिस PIBO according to their respective categories, they will have to do roughly 50% to 30% of recycling to be done by them. So वो उनको mandatorily obligated है. They will have to submit a data to Pollution Control Board that we have produced X number of bottles and we recycled 0.5x or 0.3x as per their requirement. And this 0.5% is going to increase to 80%. 50% से 80% हो रहा है. FY28 में ये 80% recycled कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. दैट इज नंबर वन. सेकेंड ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करते हैं तो रीयूज जो है वो कंपोनेंट हैज टू बी 30% और कहीं कहीं 5% भी है. 5 to 30% के ब्रैकेट में आपको रीयूज करना है इन FY26, जस्ट 1 year आफ्टर नंबर वन कंप्लायंस की, एक साल बाद 1 year एडिशनल मिला हुआ है FY26, एंड देन FY29 तक दिस नंबर हैज टू गो टू 60% इन सर्टेन केसेस एंड 10% इन सर्टेन केसेस. सो जो रीयूज वाला थीम है, दैट्स वेयर दिस रियल क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन इज गोइंग टू कम. अगर कोका कोला और पेप्सी और इवन अदर बॉटल यूजर लाइक निविया, डव और HUL और PNG जो कि प्लास्टिक बॉटल में आपको कोई भी FMCG सप्लाई करते हैं, इफ दे स्टार्ट रीयूजिंग देम in their supply chain, then they are going to pay slightly better than the market. And इसीलिए इंडिया में काफी बड़ी डिमांड आने वाली है of these kind of products, bottle की particularly, and that's why this stock becomes very interesting. इस कंपनी ने भी रिसेंटली 18 जनवरी को अराउंड 150 करोड़ का वारंट इशू किया है टू प्रोमोटर एट द रेट ऑफ 1035 रुपीज़, और करेंटली स्टॉक की प्राइस जो है वो 950 के करीब है. तो स्टिल वारंट थोड़ा हायर प्राइस पे ही इशू हुआ है. सो विच मीन्स देयर इज पोटेंशियल वैल्यू इन टू दिस कंपनी. दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू दिस कंपनी, देन डू योर ओन रिसर्च.